Hi, good evening. Sorry, I'm 5 minutes late. Just got delayed. Hi, Tushar. Hi, Dahlia. Elliot, Tushar. Who else is there? Dipti. Hi, Dipti. Hi, Jay. No, I don't need the disclaimer. This is my tarot reading. Not really. This is just a general tarot reading for the month of April. And I honestly had half a mind to cancel this because today's new moon and I did not realize, hi Pooja, hi Lifeline. I did not realize today is full new moon. And like I've always told you, I never do it on a full moon or a new moon. And but बोल दिया था, announce कर दिया था, तो it's like okay, ठीक है. So, keep your questions ready, whether you want to ask about Siddharth or Sushant. A lot of people have been telling me, hi, Pammi, that they want to ask questions about that also. Hi, Anuja. मुझे यहाँ से ना ये दिखाई नहीं देने वाले क्वेश्चंस मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ. Okay. So, first, let me do general tarot for the month of April and guidance. So, मैंने जो sun signs नहीं है वो ascendant signs का जो मैंने जो signs के जो 12 videos डाले हैं, hi Indu, that is about your ascendant. It is not about your sun sign or moon sign. Hi Kenneth. Would you like to join, Kenneth? That is not about your sun sign or moon sign. ये मैंने जानबूझ के किया है. I'll tell you why. ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अप्रैल के महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु, मार्स, they're all going to change signs. I'm not sure if even Venus is changing sign, but इतने सारे ग्रह साइंस चेंज कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फॉर द बेटर. अच्छा ही होने वाला है जो भी होने वाला है. मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है. तो ओके, I hope you're fine. How is your health, Kenneth? You can't talk. Okay, my God. Please take care of your health. So, बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होने वाला है. एटलीस्ट अप्रैल में आर आई थिंक आर अमेजिंग मंथ्स. उसके बाद देखेंगे. So, first I'm going to ask about generally about natural calamities. What are the natural calamities? Hi, Sherry. So I have spoken about it in my numerology video, but let's see what the tarot also has to say. Is there any probability of a natural calamity happening this month? So there may be a probability, but understand that the divine is guiding us. You're getting worse. What do I say? I have given you Dr. Susan's number. I think you should speak to her if you have not already. And also try and get some hypnotherapy done and find out what is, hi Amit, Indu and Lifeline, find out what exactly is the issue. So there is a probability of natural calamities, but I feel that they may be minor and generally Mother Earth is blessed. So are there going to be a lot of deaths? Maybe, maybe not. Like in some places, yes, but I feel in most places, instead of actual deaths, I think it's going to be satanic rituals, murders. So, not deaths due to natural calamities. Children, drinking and driving, drugs, accidents.
black magic. And what about earthquakes? Not happening. Not really. I mean, not major. Very minor, idhar udhar thoda sa. Uh, the balance is kind of tipped of the earth. So, uh, maybe some kind of uh, cyclone in the sea or something like that, and maybe some tornadoes. This is what I see. And mass deaths, or small pockets of deaths here and there. Oh, my battery is low. One sec. लगाया था चार्ज पे, लेकिन वो एक दूसरी वायर आ गई बीच में. फेक तालाबंदी लगेगी. I will take your questions. Let me just finish for what I am doing, and after that I'll take your questions. So ये ना comments में आगे चला जाएगा तुषार, तो दोबारा पूछ लेना. क्या सवाल पूछा था मैंने? Mass deaths. Not really. Quite controlled. And will people fall sick? सो क्या हो रहा है कि बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे फैलाई हुई उल्टी सीधी न्यूज सुन के ये मुझे धुंधला धुंधला लग रहा है कि आपको भी लग रहा है. मेरी स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली लग रही है मुझे. I don't know. That's why I tried to wipe the. Yes, now it's better. I tried to wipe the camera before, but anyway. So लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इधर उधर जो बातें सुन रहे हैं, हाय सानिया, बातें सुन के डर फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, खुद तो डरे हुए हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं. आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बीमारी आ जाएगी, ये बंद हो जाएगा, तालाबंदी एंड ऑल ऑफ दैट. डाइजेशन इश्यूज होंगे, ये मैंने न्यूमरोलॉजी वीडियो में भी कहा था. डाइजेशन इश्यूज का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो. वेट गेन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है कुछ लोगों के लिए. फूड जो है, यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ फूड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नाउडेज आर फॉलिंग सिक. अब पता नहीं पानी में कुछ मिलाया गया है या खाने में मिलाया गया है, दूध है, क्या है, मुझे नहीं पता. तो डाइजेशन इश्यूज में देख रही हूँ बहुत हैं. पानी. Watch out for intestinal worms. Just take a deworming. Now, herbal deworming जो होती है, बहुत सारे लोग टैबलेट ले लेते हैं, मैं भी लेती हूँ. 6 महीने में एक बार ले लेती हूँ. अभी 2 साल से नहीं लिया है. लेकिन जो नेचुरल तरीका है डीवर्मिंग का, वो मैं बताती हूँ. टमाटर पे काला नमक लगा के खाओ. एप्पल पे काला नमक लगा के खाओ. सुबह मॉर्निंग फर्स्ट थिंग टमाटर को आधा काटो या छोटे टुकड़े करो, उसके ऊपर काला नमक छिड़को और वो खा लो. ओके, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. दैट हेल्प्स टू डिवर्म. सो नाउ दीज डिफरेंट थिंग्स may be for different kinds of worms. So what you do, you don't do everything on one day. So one day, supposing you have tomatoes, एक टमाटर खाना है बस, ज्यादा नहीं, with kala namak. One cyclone is developing on 6th in the Bay of Bengal. अच्छा, okay, निर्वाणा है. दूसरे दिन एप्पल के ऊपर काला नमक लगा के खाओ, छिल कर. एप्पल को छिल लेना. अगर नहीं छिलना है तो उसको गर्म पानी में डिप कर लेना ताकि उसके ऊपर की वैक्स और कलर निकल जाए. उसके ऊपर आजकल बहुत फेक कलर लगाते हैं और वैक्स लगाते हैं. तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह उठ के सबसे पहले 1 कप
कोकोनट मिल्क घर में बनाया हुआ, बाहर से लाया हुआ नहीं, कोई कैंड नहीं, कोई टेट्रा पैक नहीं, नथिंग। घर में बनाया हुआ नारियल को, फ्रेश नारियल को ग्रेट करो या मिक्सर में कर लो उसे। चाहो तो नारियल का जो पानी है उसके अंदर डाल दो, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के उसका मिल्क निकाल लो। हाय डिवाइन शहिया, शहिया, हाय। और वो जो है आपको 1 कप सुबह पीना है। नाउ जब आप डीवर्मिंग करते हो, आपने अकेले ने कर ली तो नहीं चलेगा, बिकॉज आप तो कर लोगे, अगर घर में किसी और ने नहीं की है और उनका हाथ खाने में लग रहा है या कहीं और जा रहा है, उनके नाखूनों में एग्स हो सकते हैं। So, what you need to do is try and convince everybody in the house to do deworming on the same day. So make it a monthly ritual. There's no harm. दुनिया भर के worms होते हैं, and I don't know why मुझे आए दिन इंस्टाग्राम पे और जगह पे इसके पोस्ट्स इतने नजर आ रहे हैं सडनली। आई डोंट नो, मे बी दैट्स अ मैसेज फॉर मी टू डीवर्म। 2 दिन से सोच रही थी करूं, डिले हो गया, बट this is what I see here also. And I see the worms or these issues coming from water. So पानी को एक एक वो आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज वेट, आई शो इट टू यू, वेट। This is a filter that filters chlorine, fluoride. It's supposed to, I don't know whether it actually does, supposed to filter chlorine, fluoride, chemicals, and everything. So put this on your tap like this, just shove it up, put it on your tap. You इसका shower भी मिलता है, hand shower, और ऐसा एक आपके ओवरहेड शावर में लगाने वाला भी मिलता है, Amazon से लिया है। I've been using it for 6 months. So maybe buy one of these. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी को कैंगन वाटर से फिल्टर नहीं करो या बॉईल नहीं करो। अब कहा जाता है कि क्लोरीन का पानी बॉईल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पानी में क्लोरीन है तो उसको कैसे ठीक किया जाए? पानी रात को भर के रखो और खुला रखो। खुला रखने से उसमें से क्लोरीन इवेपोरेट हो जाता है। So do that, and then next morning maybe you can boil it, and then उसके अंदर फिटकिड़ी होती है ना, एलम एलम, उसको ऐसे घुमा दो 8-10 बार। हाय तृप्ति, what's in store for me regarding financial income and work? So फिटकिड़ी घुमा दो, उसके अंदर अगर अब भी कोई मैल बैठी होगी तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। देन एक मसलिन क्लॉथ लेके यू कैन स्ट्रेन द वाटर। ओके, सो बी केयरफुल ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। प्लीज वो बॉटल्ड वाटर तो बिल्कुल मत पीना। इससे अच्छा, इफ यू फील थर्स्टी एंड यू आर आउट एंड you need to drink something, get a glass of fresh juice from somewhere, not canned, fresh. So there is a possibility, like I said, not of mass deaths, but deaths, yes. अब तांडव कर रहे हैं शिवा, तो कुछ ना कुछ तो पंगा होएगा। And again, the same thing, digestion, food. Try and stick to vegetarian, and you need grounding. For your health to be stable, you will need to do grounding. Now, grounding can take 5 minutes if you can just do it. I also tie pure cotton fabric. हाँ, मलमल का कपड़ा जो होता है।
पानी को उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसमें, आई थिंक वो लॉ ऑफ वन के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. पानी के अंदर प्लीज विस्पर सम मंत्रा, maybe Gayatri mantra, maybe Om, maybe I love you is enough, and just whisper some mantra. Even when you cook food, try and do that, because I somehow feel purposely some negativity is being added in the water and the food. So, एक मैंने पोस्ट पढ़ा था, मार्च 19 से लेकर, बिकॉज इक्विनॉक्स होता है मार्च 19 से लेकर अप्रैल मिड 15 या 14 या 15 तक, ये पूरा मंथ 40 डेज का, एक्चुअली एंड ऑफ अप्रैल 40 डेज का सेटनिक रिचुअल्स रोज किसी न किसी शहर में होते हैं पूरी दुनिया में. आज इस शहर में हुआ, कल उस शहर में होगा. बहुत सारे लोगों को मारा जाता है. और व्हाट इज दैट, ओके, सो बहुत सारे लोगों को मारा जाता है और रिचुअल्स होते हैं, तो उसके थ्रू हो सकता है कि खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया गया हो. Now, after speaking about natural calamities and health, let us speak about how the relationships are going to pan out in this month generally, because I foresee a lot of, so it's, I think it's a month of extremes. एक तरफ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, और एक तरफ कुछ लोगों के लिए, हाय जया, they will, the relationships will just get worse by the day. They must have already started for those people in March. मार्च में अगर रिलेशनशिप्स का हाल बुरा है, तो a lot of people will travel. For some it will get better, but a lot of people will travel, maybe to meet their loved ones. And so, like I said, this is a month where people are going to be very emotional, very sensitive. They will get triggered very fast, and close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So this is for relationships, the guidance. And the other one is, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. We have discussed this in the Law of One video also. I don't know if you all have seen it. How many of you all have seen it? I have no idea. But we have discussed this, that more than your mind, focus on your heart and listen to your heart, because the answer to any question dwells in your heart. And so, are there any twin flames that are going to meet in this month? No, it's just going to be very superficial relationships or karmic relationships. And I see a lot of people meeting for temporary relationships, like for example, meeting to have sex, meeting for one night stands. Nowadays I'm more spiritual than before. I'm more happy. April में लोगों की कुंडली जागरण होगा क्या, जो meditation कर रहे हैं. So Nirvana, thank you, but today is new moon, so I would not take the risk of doing personal readings. Anyway, this is a reading for
April, not personal. The video that I was going to do with my students for so that I can do free questions for y'all. Actually, this was supposed to be that. They were supposed to join. They were supposed to do questions for y'all. और आराम से 2-3 घंटे मतलब ये चलने देना था मैंने. But like you can see, one has fallen super sick. She's on bed. The other one is getting married. So she's traveling today to the destination where she's getting married. And the third one was too scared to come online alone without the other two. So that is the reason it's not happened. कोई बात नहीं. I will come in next week, maybe, one of these days. And I'll do a free session. And that time you all can ask me whatever questions you all want. I will definitely try. I know. I was even thinking about that, Preeti. मुझे ना अपने चेहरे में बहुत ज्यादा लाइट पसंद नहीं है. Happy? Okay. No problem. So, right, it's work. Okay, so we were talking about relationships. Now, twin flames. But so I was saying that I see a lot of people meeting people for a new beginning in the manner. What I mean is, you know, friends with benefits like they have nowadays. It's very popular. Maybe just one night stands or flings. So I see that happening more. As far as people who have been facing relationship issues, their issues, some of them are going to get really better, and some of them are going to end this relationship. Completely end, my God. Absolutely end. Your nakshatra Shatabhisha, please help me. So, the big bell. Yeah, the big bell. So your nakshatra Kshatabhisha, what do you mean by that? Now, do you have any generalized questions about relationships? Then I can take that. And after this, we come to finance, share market, crypto, politics, and then you all can ask me your questions on all the other things that you all are so fond of talking about, be it COVID, Sushant, Siddharth. Okay, so finance, share market. इतने मोटे मोटे और इतने टफ और इतने बड़े कार्ड्स क्यों बनाते हैं ये लोग कि शफल करने मुश्किल हो जाएं. Okay, so let's ask about. In numerology, I had mentioned that finance is going to get better. It's definitely going to get better. What will happen to China in April? We'll ask. What will happen to China? What will happen to China? We'll ask. My birth date, 3/12/92. Okay. I just mentioned, Rahul, that I am not doing personal readings. I will come back for that next week. Now, what is the share market has been going down, and I have heard that the Sensex is going to dip further, or that is the plan of the elites. So it continues to go down, but it's a false fall.
Will it come up again? Not very soon, but eventually, let's say by the end of this year, will it come back? Yes, I'm happy. A lot of people may be feeling that, oh, I've lost my money and all that. It's a false dip. It will come back by the end of this year. Definitely, it will come back. And what about crypto? Crypto is going to come up. People who have invested in crypto, they are going to be happy and they are going to make money. India Russia relation. Amit, I think you would probably be able to explain that better. I doubt that I will remember by then, Nirvana. So, okay. So, crypto will only get better, and all those people who've invested in it will make good money. As far as gold is concerned, gold is going up already, and silver will go even further up. Uh, how will generally finances of the people be? Generally, for everyone, you, me, everyone. So people will get busy with work. This I have already mentioned in my numerology video. I can see that a lot of people are going to have a lot of work, so much work that they won't have time for themselves, and they're going to be really happy and spend time with their family. Phone lena jara. So it's going to be good. हेलो हाँ जी है आप कौन धीरे बोल. अच्छा आंटी अच्छा आंटी बोल मैं बिजी हूँ, बाद में करूँ. हाँ जी वो थोड़ी बिजी है बाद में आपको करते हैं Now coming to what I had on my mind. Ring the bell. Oh, acha, that's what you want me to do. Okay. USD will go down and other fiat currency and crypto. So crypto it says is going to go up, but USD I can ask. Hi Marina. USD will start coming up now. Wait, no, you said USD will go down. It says coming up. Very weird. My cards joke with me sometimes. I got it from McLeodganj. I got it from there. You get it in Pondicherry also, and I think you may get it in Goa also. So this light, there is something wrong with this light. ये बुझती जलती रहती है, कभी medium हो जाती है. So this is very funny, the cards that I'm getting, मुझे हंसी आ रही है because um,
Yeah, USD will go down, but it's a fake down. It's very fake. This is the answer that I'm getting. Weird answers sometimes tarot gives me. वो लाइट की तरफ देखा ना, अब मुझे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे. I know nakshatras, yes, but I don't know about the nakshatras. So I don't know when you say Satabhishta, तो वो नक्षत्र एक्चुअली क्या होता है मुझे नहीं पता. क्या होता है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ अपने नक्षत्र के बारे में पता है बस. When will China get exposed to the rest of the world? When will China get exposed to the rest of the world? Very soon, actually. Very soon. It says you need to stand up for your power. That means the people of China need to stand up for the truth against the kind of government that they have, and it will happen very soon. Suddenly, one day it will happen. It will happen. And you asked me what about what is going to happen with China. Somebody asked me that question. Like there's a pandemic going on there and all of that. So things are bad, but things will settle down. I feel um, people are on the streets. They are protesting against the lockdown in China. But on the other hand, there are people. Ouch. This is very planned by the elites. I never noticed this in the card before. My God, and I'm noticing it now. It's like shining out. So it is planned by the elites, and the masses are on the streets and they're fighting against it. The powerful are taking advantage. This is all planned. There is no real pandemic. So what's going to happen? Is the lockdown going to shut down? The shutdown, as in, will the lockdown be taken away? So I mean to say, the borders will open and things like that. So yes, it will. How soon will that happen? Oh, in a matter of days. In a matter of days. uh, Talks will happen in a matter of days. They will talk about it, they will discuss it, and because of the people protesting and coming out on the streets and everything, eventually by the month of June, maybe, the lockdown will be taken off, is what I get. How will financial income, work, and travel be in my horizon? Are concerned about financial stability. Thank you, Kenneth. This bell is a sound ball, is like a sound ball. Is there going to be a big shift in the universal energy this month? So apparently, what I heard is that the Earth is shifting very fast, the axis. So there is going to be, but I will ask. Goosebumps, you're getting goosebumps. Good. So that means it's a confirmation. Will Imran Khan be able to say, I'm not interested in Imran Khan and his seat in Pakistan? Seriously, how does that even concern us? Our PM is life is in danger. Why would you say that, Meenakshi? I have no idea if his life is in danger. मैं तो क्या पूछने वाली थी, मैं तो कुछ और पूछने वाली थी. यूएसए हो गया, चाइना हो गया. Not really. It's not really in danger. It may seem to be in danger, but it only seems to be in danger. Maybe it is
that is, if you are saying, I don't know anything about it, I don't much follow politics. It is it is a game. It is just to fool the people. So life is not really in danger. Okay. I don't know why you're saying life may be in danger. Other than that, health, relationship, finance, China, Russia, and Ukraine. Is there a real war going on? It's a satanic plan that's going on. Why is this looking different to me? It's a Satan. Oh, it's a satanic plan that is going on. We all know that, NATO and everything. Uh, are people really dying? Yes, the people are dying. And is this going to end soon or not? Justice will be done. I asked if it's going to end soon. No. Ah, okay. It's not going to end soon. So that's sad. And if the people are dying, thank you, Nirvana. Is it possible that any type of beings from another planet abducted some profound and intelligent humans from this planet and they have been announced dead? सीधे सीधे पूछ रहा पार्थ, इतना घुमा फिर हंसी आती है मुझे. सीधे सीधे पूछ कि क्या एलियंस ने सुशांत को कितना जलेबी की तरह घुमा घुमा के पूछ रहा है. Okay, so basically what you're trying to ask is, have aliens abducted Sushant? I'll take angel cards for this. Uh, and remind me, I want to do the dragon cards and the nature's whispers cards to find out about the new world order and about where our earth is going. So somebody asked me about the world, the mother earth. Are there what was that question? Is there going to be, when are they going to announce? The queen is dead long back. I don't know why they're not announcing it. एक क्वेश्चन था about universal energy in this month. So remind me to ask that question again when I take out the nature's oracle and the dragon oracle cards. Okay. Not only him, I mean, even in the past, like my Mr. Pratik said on Tuesday, they have been doing it. Yes, he said that. Okay, so they have beings from outer planets been abducting people for specific reason from this planet. It's up to you to believe. It's up to you to believe. Okay. Yeah. Yeah, they have. It's up to you whether you believe it or not, but they have. And what is the reason for them to do that? They don't like peace on earth. So they are wanting to, like he said, they want to. So if I translate this, this is a very personal message here for a person
uh, if I want success, if I want to be, very successful and famous and everything, and um, rich and all, so it's like they want, what would I do? I would, what do the elites do? What do the Illuminatis do? They want power, they want success, so they are trying to overpower the masses. These people, whoever have done this, they want to overpower Earth. They want to take control of it, and that's why that feeling, when I saw the card, the feeling that came was they don't like the peace on Earth. That's the feeling, like Earth was really doing very well and beautiful, and it's one of the best planets and all, but they just couldn't see it. I feel they were jealous. I get that energy of jealousy, and it's such a beautiful card, but just imagine I'm getting that energy of jealousy, and they wanted to turn things around. And they abducted people so that they could help them. So when I say this, yes, whatever Mr. Praveen said that day, Praveen Bhatia, I think that colors my judgment. Whatever he said, that is definitely on the back of my mind. But I see people flying here. So obviously, that's what comes to my mind. And they do bring that person back to the earth to do the work that they want him to do, him or her to do. They send that person back on this earth to do as required by them. This is what is coming to me here. uh, NIA says they find 20 kg RDX, 28 sleeper cells to assassinate PM Modi. बकवास है, मुझे तो नहीं लगता. When will cloning and Hollywood nexus be revealed? Isn't it already revealed? It's already revealed. You think it's going to be revealed on the mainstream media? The public knows it. Did they do this to Neil Armstrong? You mean take him to space? The aliens abduct him and all? No. Neil Armstrong, they say, visited moon, but that was a sham. Nothing like that ever happened. And cloning and Hollywood and everything, we already all know about that. Yes, there are people who don't want to accept it and who don't want to even look into it or believe all this, but it's already exposed. The television and newspapers are not going to expose it. No, they didn't do it to Neil Armstrong. Did they do it to Sushant? Okay, let's ask. Did they do it to Sushant? There is a possibility. Don't give up on those you love. There is a possibility. This is the card that I have got. The outline of that person looked very much like that, and there was energy being created between the two people and their hands. Okay, what other questions do you have? I'll just take another deck. So, you know what? I had a question in my mind about, I was planning when my students come live, I will ask them those questions so that they can answer instead of me answering. But ab students to aaye nahi. Some videos say NASA has been communicating with aliens. Yeah, NASA has been communicating with aliens since what?
almost a century, 1930s or 40s. One sec, I'm sorry. So NASA has been communicating with aliens. There are videos about it. There are um, books about it, and there are some videos on YouTube. There is some stuff that was shared also on Telegram. What tarot deck are you using? There are many, Nirvana. So, क्या बताऊं मैं? Did they invite aliens physically here? No. So, okay, what we have been, Urbi, if you have not seen, I suggest that if you're so interested, you should see that Law of One videos that I am uploading. In that, it is clearly mentioned that it is clear. I mean, we spoke to this person who is reading that book out to us and who is telling us a lot about this. We call him Pa. And I think it was some document that I read. He sent me some document he sent me, a book or something, in which it was mentioned how the aliens and there were some videos I saw. The aliens came to Earth to help Earth. It was in Law of One also. Aliens came to Earth to help Earth, to tell people, how they could, help them with their technology and how they could do things better and all. But what the Earth people did, the humans, they kept all that knowledge for themselves, uh, used it for these 33 families. 33, the number 33 is, why is it, there's been some posts going around about number 33, because it is 33 families around the world who wish to remain in power, or who uh, wants to conquer the whole of Earth and keep it for themselves, and they want to, eliminate everybody else. Hi, Manisha. Sudden removal of COVID restrictions all over in India. A new, yes. About June, I will ask Parth. That is definitely on my mind. And now, since you remind me, it has been on my mind. The first thing that has been on my mind is the famine or food crisis that somebody keeps talking about. I want to know about that. Is there going to be a food crisis? No. I'll show you. The cards have fallen out. One is peaceful resolution. So, no. The message that I get is no, it will not happen, and there will be some kind of a peaceful resolution. The divine will interfere and make sure it doesn't happen. Why do I say this? Divine timing. I'll read out what is written. Angels want you to know that your prayers and blessings received will materialize in life according to a preordained divine timing. I have been praying, and when I told my mom, obviously she did pray as well. And then, okay, I won't read that. So, according to me, this says peaceful resolution. That means it won't be actually as bad as is being told to us since last year. Not because it was not going to happen, but because the aliens or maybe divine has interfered and helped the earthlings so that this does not take place.
that the elites and Illuminatis do not play this dirty game. Ulta. So there was to be a food crisis. People were meant to die. This was the plan. Out of hunger. But the savior will come. The savior will come to save Mother Earth and all of us. So, yeah, the angels never go wrong. Are there negative aliens on the moon? Are there negative aliens on the moon? Yes, negative aliens on the moon. I got the sun card. Are the aliens on the moon negative or positive? So, like on Earth, there's a mix of both. There's a mix of both. There are people on the moon, but it's a mix of both. We're talking a lot about aliens today, no? Where does this come from, Parth? So, Parth, any other questions? You know what I was thinking? I feel the people on the moon are very neutral. So, moon for us signifies emotions and love. But the people on the moon, they're very neutral. They are, I mean, they don't really have to be very positive or very negative. I feel they're very neutral. They have taken all our ancient sacred symbols and converted them into evil symbols, the triangle and the hand mudras. Yes, that's true. The elites and Illuminatis have actually taken from our religious texts and from the aliens and you know the consciously evolved people. They have taken all these mudras, all these mantras, all these rituals, and they use it for negative purposes. So, whatever symbols and everything they use, the symbols in itself are not negative. They are using it for negative purpose. Sudden removal of COVID question. Sudden removal of COVID. So, yes, it is a plan. Yes, it is. Uh, it's because I think they are not left with an alternative. They are scared that people will now begin to see travel had to be started. People needed to travel. People were not happy about the way things were going. And now, if they would not have done that, people would, till now, there were a very handful of people who were protesting against it. And everything was happening online. But in most of the countries, it's on, people are on the streets. They were scared that here also, if they don't remove it now, people will be on the streets. And this time, मतलब इंडियंस तो फिर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, इस पार या उस पार खदेड़ डालते. याद है मैंने जब 2022 का न्यूमरोलॉजी किया था, मैंने क्या कहा था कि इस साल मुझे ये लगता है कि जो लोग हैं ना वो पॉलिटिशियंस के घरों में घुस के उनको मारेंगे, लूटेंगे, पैसे वालों के घरों में घुस के उन्हें मारेंगे और लूटेंगे. अब मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये कहा, मुझे लगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, अभी भी हो सकता है. लेकिन उन लोगों को शायद इस बात का डर था, तो maybe that is the reason they have removed suddenly all the restrictions.
अब वो क्या करेंगे कि लोगों को पैसों से परेशान करेंगे. So financially, they are going to trouble people. They are going to trouble people in other ways, like making food expensive and महंगाई बढ़ाएंगे. So eventually, lockdown जो है वो क्या इस साल दोबारा लगेगा? क्या इस साल दोबारा लगेगा? नहीं लगेगा. I'm so happy. I was really stressed about this. And thank you, Parth, for asking this question. I was really stressed about this. वो डर बैठ गया था मेरे दिमाग में कि फाइनेंशियल फूड स्कैसिटी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉकडाउन लगेगा. लेकिन इस साल पूछा था मैंने, और इस साल तो कह रहे हैं कि बस नहीं लगेगा. When will the divine savior arrive? Divine savior is here. It's here. He's not going to tapko from above. There is no divine savior coming. We are all the divine saviors, and we have to protest, and we have to protect ourselves, and we have to fight this war with brains. मतलब स्वॉर्ड और बंदूक लेके नहीं उतरना है, हमें ये दिमाग से खेलना है. वी हैव टू. मैंने बहुत पहले कहा था, लास्ट ईयर कहा था. मैंने ये बात लास्ट ईयर कही थी, पता नहीं किसी को याद है. मैंने लास्ट ईयर ये बात कही थी कि ऐसे जिंदगी में अपने चेंजेस लाओ कि ये लोग जिनका हम सामान यूज कर रहे हैं ना, चाय, कॉफी, शैम्पूज, नॉन स्टिक बर्तन, क्लोरीनेटेड वाटर, चॉकलेट्स, ऑल दीज एक्सपेंसिव थिंग्स, ब्रांड्स, ब्ला ब्लू, ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, बंद करो इससे यूज करना. ये जो रेडीमेड्स मैंने भी पहन रखा है, पर मैंने तो बहुत पहले खरीदा था. लेकिन ये जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इंडियन चीजें यूज करो, सबसे पहली बात. दूसरा, टेलर भूखे मर रहे हैं, कपड़ा खरीदो, टेलरों से सिलवाओ, ये ब्रांड्स वैंड्स के चक्कर छोड़ो. सेकेंडली, खाने पीने की चीजें, पैकेट फूड खाना बंद करो. ये लोग सबसे ज्यादा कमाई इनकी वहां से होती है. चिप्स खा लिए, चॉकलेट्स खा ली, ये खा ली, वो खा ली, ब्रेड खा ली. इंडियन खाना खाओ ना यार. हाँ. Thank you, Shubham. Now, if you have asked that question to the universe will give you the answer. Manisha, are agencies working on SSR case? Any updates this month? Yeah, I will ask that. Will Bollywood and its kingpins be burnt to ashes literally in the future? एक बात बताऊं उर्बी, मैंने ये बहुत बार अपनी वीडियोस में कहा है कि जब आप अपने अंदर किसी के लिए गुस्सा पालते हो, बदले की भावना रखते हो, उन्हें कर्स करते हो, तो भगवान चुप करके बैठता है. लेकिन जब आप अपने दिल से, दिमाग से उस चीज को निकाल देते हो और कहते हो फलाने ने ये कर्म किया, यू हैंडल इट, तब, अब ये बोलते बोलते मेरी उंगली ऐसे हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इल्यूमिनाटी हूं, ओके. तब भगवान उठ के एक्शन लेता है. That is when he says, okay, you left it up to me, now I will do what is best. So we need to forgive, because जब हम अपने अंदर गुस्सा पालते हैं, जब हम अपने अंदर बदले की भावना रखते हैं, हम अपना एनर्जी वाइब्रेशन लो कर रहे हैं. हमें अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, पॉजिटिव होना है. इफ यू वांट टू मूव ऑन टू द 5D, इफ यू वांट द अर्थ टू मूव, अच्छा अर्थ वाइब्रेशंस का पूछना रह गया, अर्थ टू
peacefully move into the 5D with all of the climatic changes that are happening because of the shifting of the Earth's axis. Not because of there is any climatic change because we did it. No. ये सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं इतने सालों से एनवायरमेंट के नाम पे, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे. वो दे वर प्रिपेयरिंग अस मेंटली टू मेक अस फील गिल्टी, मेक अस फील फियर. हमारे अंदर सारे नेगेटिव इमोशंस भर के हमारी वाइब्रेशन को लो करने के लिए वो लोग इतने सालों से कर रहे थे. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो सदियों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, आगे पता नहीं कितने हजार साल बाद दोबारा भी होगा. सो जब हम किसी अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस पालते हैं, इट्स लाइक होल्डिंग अ बर्निंग कोल इन योर हैंड. किसी ने फेंका, ओके, गलती उसने की, गलत काम उसने किया, हमने अपने हाथ में पकड़ लिया. किसी ने कोई गलत काम किया, हमने वो गुस्सा अपने दिल में पकड़ लिया. जल कौन रहा है? हम जल रहे हैं. तो जब हम उसको छोड़ेंगे, जब हम उसको माफ करेंगे, तब उसका इंसाफ होगा. इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट कब वो मरेंगे और कब उनके साथ वो एशेस वैशेस. हाँ, ईश्वर ने इंसाफ करना है. ये पूछो कि ईश्वर इंसाफ कब करेगा. अब हमें सच्चाई का नहीं पता. We don't know. Till date, we can make a lot of assumptions. I can do a lot of tarot. Vibhor can, do a lot of breaking news. Everybody can talk a lot of things. People say he's dead, he's been murdered. There still are people who say that he suicided. Then there are people who say that, even I have said that he is alive, he's not dead. Either he was revived or God knows what happened, but he is alive. Then there are people who say that he's abducted by aliens. Then there is, I'm talking about the possibilities, okay? There are not people. Then nobody has told me, but let's say that there is a possibility that he is abducted by the aliens, by the Orion group, because the Orion group abducts people who are super intelligent and with multi-dimensional beings. They abduct them, brainwash them, they torture them to such a level that their brain becomes numb and then they are forced to मैंने आज ही एक पोस्ट पढ़ा, इतने सारे उनके ऊपर टॉर्चर होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं ताकि वो अगर उनको ओरियन ग्रुप वाले धरती पे छोड़ भी देना तो वो इंसान इस धरती का बुरा ही करेगा. ऐसा वो चाहते हैं और इस तरह से वो उस इंसान का दिमाग मैनिपुलेट करते हैं. और अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे ये फीलिंग आई है अपने रीडिंग्स में जब मैंने कार्ड्स किए हैं या विजन्स में कि उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या उसके साथ टॉर्चर हो रहा है या जो भी है. ऑन द अदर हैंड there is also a possibility that he decided to disappear himself. मेकअप वाला मिला था वहां पे, उसके घर के नीचे मेकअप वाले की गाड़ी दिखी थी. मेकअप वाले का पता चला था, साहिल खान का गैंग जो है उसके बारे में किसी ने बताया था. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों की मदद से, उल्टा जिनको हम समझ रहे हैं कि इन लोगों ने उसे मारा, हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है 0.1% पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि उन लोगों की मदद से वो एस्केप हुआ हो, या उसे पता चला हो कि ये लोग उसको मार देंगे तो वो खुद, क्या पता, मोदी के हेल्प से एस्केप हो गया. और मोदी के हेल्प से नहीं, ये हो सकता है कि अगर मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकल, हवा में बातें कर रही हूं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूं कि अगर सेंटर में कोई अगर उसको मारना चाहता था कि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये जानने के बाद कुछ लोगों ने उसको एस्केप करने में हेल्प किया या वो खुद कहीं भाग गया. पॉसिबल है. हो सकता है उसकी फैमिली को पता हो, फैमिली ने हेल्प किया उसे भागने में. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. हमें कुछ नहीं पता कि हकीकत में क्या हुआ.
और ना हमें कभी पता चलेगा। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रही हूं कि लीगल जस्टिस मुझे नहीं दिखती होती हुई, डिवाइन जस्टिस मुझे दिखती है होती हुई। नाउ few days back, since the last few days, I've been reading somebody writing on Twitter and tagging me. मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं, और मुझे टैग किया जा रहा है, और कुछ उसमें सुशांत को बद्दुआएं दी जा रही हैं, विभोर को बद्दुआएं दी जा रही हैं कि तुम्हें सब पता है। ये मुझे नहीं पता वो क्या स्टोरी है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। आई मीन सीधे सीधे कोई अगर आपको अप्रोच करता है हेल्प के लिए तो आप उसकी मदद कर भी सकते हो, लेकिन जब कोई इतनी नेगेटिविटी और कर्सेस एंड ये वो, तो वो उन लोगों का झंझट है, उसमें मुझे नहीं पड़ना। if somebody does come and asks me for help personally, maybe I will think about it. But somebody has been saying, cursing Sushant, that he is alive, he knows what's happening, and he is not coming and asking for justice for himself. How do you know that he's in a position to ask for justice? How do you know that he's not abducted and on some other planet? How do you know that he is not hiding because he knows that the moment he steps out, he's going to be killed? तो वो मारा ही दिया जाएगा, तो फिर वो जस्टिस कैसे मांगेगा? ऑनलाइन आएगा तो उसका आईपी एड्रेस वगैरह पता करके वहां जाके मार देंगे उसे। आई मीन कुछ तो सोचो, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ना तो विभोर भगवान है, ना मैं भगवान हूं। उसने कुछ कह दिया या मैंने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, या वो वरुण है या वो कौन क्या है, संदीप है, या वो जो भी है, मैं तो आधे नाम भी भूल गई हूं। कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। सब अजम्पशंस कर रहे हैं, सब हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई तड़पा था जस्टिस के लिए। क्यों तड़पा था? कौन से एंजल्स ने या कौन सी रूह ने या कौन सी यूनिवर्सल एनर्जी ने हम सबको इतना तड़पाया कि हम सब निकल पड़े जस्टिस ढूंढने। जस्टिस तो ढूंढ रहे हैं, पर किस चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, वो तो पता चले। उसकी मौत के लिए ढूंढ रहे हैं, उसकी अबडक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, या कोविड, मे बी ही वॉज किल्ड और ही went into hiding because he knew about this entire elites and illuminatis का कोविड का प्लान। ये सोचा है किसी ने? हो सकता है कि वो सिर्फ बॉलीवुड को एक्सपोज नहीं कर रहा हो सकता है वो ये एक्सपोज करने वाला हो, सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्सपोज नहीं करना चाहता हो, ये एक्सपोज करना चाहता हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सोचा है किसी ने? Hanuman ji had burned Lanka. I was envisioning that. When will the negative aliens on earth be destroyed? Will our legal measures work on them? Our legal measures will not work. They cannot work, Urbi. But the negative aliens on earth are mainly under earth. They are underground. They're not so many on top of the earth as there are underground. And I believe, from what I've been hearing and the videos that I've been watching and posts that I've been seeing, that the aliens, Gaia, Galactic Federation, and हम लोग ये जो लॉ ऑफ वन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि लॉ ऑफ वन के साथ साथ जो हम लोगों को मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं या सिखाए जाएंगे, वो करके अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके हम लोग गैलेक्टिक फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के साथ कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांग सकें और वो लोग हमारी हेल्प करें इस गंदगी को साफ करने में। अगर आपको सच में, उर्बी, यू रियली वांट दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, प्लीज जॉइन द लॉ ऑफ वन, do read that book. I have shared that book on my group as well on Telegram. Do those meditations, raise your vibration. You need to raise your vibration by meditation, by breathing exercises, Kriya Yoga, Sahaj Yoga, by changing your diet to vegetarian, by doing a lot of other things, main thing is not having any negative emotions inside you. अपने अंदर वो नेगेटिव जो इमोशंस आ रहे हैं उनको पहचानो, उनको रोको, खुद को रोको,
पिछले 3-4 दिन से, ये जब न्यू मून फुल मून होता है थोड़ा असर होता है मुझ पे। पिछले 3-4 दिन से टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या जो भी हो रहा है। हाँ, बैठा है पार्थ। हाँ, सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। तो वाइब्रेशंस रेस करके, are you on the law of one group? Are you doing those meditations? Are you reading that book? Please do that. मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग चाहते हैं कि ये हो। और आई मीन इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव, यू नो, सोचते हुए भी अजीब लगता है कि हम लोग एलियंस से मिलेंगे, स्पेसक्राफ्ट पे जाएंगे, उसे देखेंगे। मजाक कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सब कहानियों में होता है। फेरीज थोड़ी होती है, फेरीज थोड़ी आगे हेल्प करने वाली। नोम्स ये सांता क्लॉज की स्टोरीज में होते हैं, पर ये सब सच है, ये सब सच है, ये होता है और ये होगा। और इन्हीं फेरीज और स्पिरिट्स और गोस्ट्स और नोम्स और जिन्स, you can ask them for help. Every tree outside, in the garden, the flowers, the fairies are in the flower gardens with the flowers. There are mermaids and dolphins in the sea. There are jinns and spirits sitting on the trees that can help you. All you need to be is just nice to them. Everybody needs a little bit of love. That's all. Do you know that opening portals have led to negative energies attacking the astral realm? Yeah, of course I know that. I mean, it is a possibility. I have thank you, Dimpy. You just go on to Telegram and my group is open. It's Guineanaja 11, but uska chat group, because Guineanaja 11 mein you cannot post a comment or chat or post a link. वहां रख दे, नहीं रख दे। So there is a chat group Guineanaja 111 which is connected to that. Everything that I post in Guineanaja 11 automatically comes in Guineanaja 111, and there you can comment, you can discuss, you can talk to others, you can share views and all of that. So that is my channel. Once you come on that channel, then you can ask me what you wish to ask me. Link provide karu. T.me, yes, Guineanaja 11. It is T.me/GINNIANEJA 11. Why am I London number? Why shouldn't it show up? Of course it should show up. You can have a number anywhere in the world. There are people from all over the world who are there on my Telegram group. Saturn is moving into Aquarius from Capricorn. It will go retrograde in June? Yes, I know that. So again move into Capricorn till January 23. That time बहुत justice होगा. Can you check this about Saturn? Yes, Rachna, I am aware about that. And it will go retrograde in June, if I'm not wrong. And it will go into Capricorn till January. It will be, yes, again in Capricorn in January. I know that. And after that, again for a few months, it will be in Capricorn and then it will come back. जनवरी में क्या होगा ये दिसंबर में बात करेंगे, बट फिलहाल उसको एक्वेरियस में जाने दो। बहुत ज्यादा फ्यूचर से डरने के बजाय, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में, लंबे फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय, why not enjoy the present month? Why don't April में Jupiter is moving into Pisces, Saturn is moving into Aquarius, Rahu Ketu is moving into Aries and Libra, and Mars is moving into Mars is, I think, already moved into Aquarius. Saturn is going to join it, and Venus also has moved, if I'm not wrong. Check करूं.
Venus is Mercury, Sun and Moon are today in Pisces. Venus is with Jupiter in Aquarius. Mars is with Saturn in Capricorn, but Mars is going to move very soon. I think in the first week or something in Aquarius, and or maybe the mid of April. No, not mid of April. Before that, so eighth of April, it's going to move into Aquarius, and Saturn moves on the 30th of April in Aquarius, and Rahu and Ketu will move on somewhere by I think 12th or something. 17th is the full moon. So जस्टिस होगा, दैट टाइम जस्टिस होगा. सैटर्न जब आएगा तो बहुत कुछ होगा. सैटर्न जून में रेट्रोग्रेड जा रहा है, जनवरी में नहीं जा रहा है. जनवरी तक वो कैप्रिकॉर्न में है, लेकिन जून में रेट्रोग्रेड जा रहा है. तो जून से शुरू होगा जो भी शुरू होगा. When they say you will own nothing and be happy, you know what I feel like saying when somebody says that? Somebody, as in when they say you will own nothing and you will be happy, कुछ नहीं होने वाला ऐसा. जहां शैतान है वहां पे भगवान भी है. They are owning nothing and being happy is literally enlightenment. This is what the fifth density dimension is. Good luck. Well, the elites and Illuminatis are saying that you will own nothing and you will still be happy. Why? Because according to them, in the new world order, तुम्हारा घर, जायदाद, जमीन, गाड़ी, पैसा, सोना, सब कुछ वो ले लेंगे और तुम्हें एक सोशल क्रेडिट कार्ड सिस्टम पकड़ा देंगे. वो क्या बोलते हैं, सोशल क्रेडिट. और तुम उनकी बात मानोगे तो तुम्हें राशन मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा. मतलब तुम काम भी मत करो, बस उनकी बात मानो, खाना मिल जाएगा तुम्हें. You really want that kind of a life? June to January justice होगा. Okay. June to January बहुत सारे जस्टिस बाकी है. जिया का जस्टिस बाकी है, परवीन भाभी का जस्टिस बाकी है, सुशांत का बाकी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो इन लोगों का चल रहा है वो जस्टिस बाकी है. The situation will improve. That means 100% तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत होगी. और किसी ने मुझसे पूछा था कि सीबीआई वगैरह, एनआईए वगैरह वो लोग सुशांत के केस पे काम कर रहे हैं कि नहीं. So the situation will improve. Already last few months में I have seen a lot happening and the angels are saying communicate clearly. मतलब exactly तुम्हें कौन सा justice चाहिए कि अगर सुशांत को अबडक्ट किया है तो जिसने अबडक्ट किया है उनके साथ जस्टिस करो. मतलब उनके कान पकड़ो. अगर सुशांत को किसी ने मारा है तो जिसने मरवाया है और जिसने मारा है उनको पकड़ो. तो एग्जैक्टली कौन सी वाली जस्टिस चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी वैसे बॉलीवुड की लंका जले, तो बोलो भगवान को कि जो लोग गलत हैं उनके घरों में लग जाए आग और वो मर जाए या उनका सब कुछ खाक हो जाए. बोलो अगर यही चाहते हो और इस तरह की जस्टिस चाहते हो. आई मीन गुस्सा आता है, हर एक को आता है, मुझे भी आता है. बट कम्युनिकेट क्लियरली इज व्हाट गॉड इज सेइंग, व्हाट द एंजल्स आर सेइंग. व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू सी or wants done, tell God. Today is new moon. You can write affirmations, write it, light a candle. मेरी candle कहाँ गई? यार मैं candle जलाना भूल गई. Light a candle, do those affirmations that we want justice, and I mean wait for it to happen. जब divine timing होगा हो जाएगा. मेडिटेशन के लिए मंत्र अच्छा बोला है अनुराग शर्मा ने. Okay, because इक्विनॉक्स का है. मार्च था, अब तो अप्रैल हो गया. एंड अप्रैल में वो क्या कहते
मार्च में वो भी शुरू होता है ना, मतलब एरीज मंथ शुरू होता है. सो आई सॉ वीडियो टुडे, आई शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. द ओरिजिनल कैलेंडर was supposed to be the Hindu calendar. इन लोगों ने हिंदू कैलेंडर जो था उसको 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे बना दिया. हिंदू कैलेंडर हटा के ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करने के लिए बोल दिया. बट एक्चुअल कैलेंडर जो था वर्ल्ड में जो फॉलो किया जाता था वो हिंदू कैलेंडर था, जिसमें 13 महीने थे. गुड इवनिंग शालू. Can I sound the bell again? You so love that bell so much. When the politicians will get punishment by people. Why by people? Why not by the divine? लोग क्या करेंगे? जाके जूते मारेंगे, घर जलाएंगे, इतना ही करेंगे ना. जब भगवान करता है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो कमर टूट जाती है. Let the divine do justice with the politicians. That is an interesting question. This definitely needs to happen. Not only the politicians of the entire world, but the elites and the Illuminatis. वो वाली जस्टिस कब होगी, वो ज्यादा जरूरी है. अभी तो फिलहाल नहीं हो रही बॉस. अभी तो फिलहाल नहीं हो रही. लड़ना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. भगवान से मांगो. आज न्यू मून है, प्रे करो. थैंक यू राहुल. व्हेन पीपल विल रिवोल्ट, पता नहीं कब रिवोल्ट करेंगे. हम लोग तो अपने तरीके से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं. बट द बेस्ट वे टू रिवोल्ट, वो जो एलिट्स है ना, वो पता है कौन सा पैसा कमा रहे हैं और जो ऐश कर रहे हैं ना बैठ के, उन चीजों से जो हम खरीदते हैं और अपने घर में रखते हैं और खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं. और वो जो शेयर मार्केट वगैरह, अगर हम लोग सब अपना पैसा खींच लेंगे, हम वो चीजें यूज नहीं करेंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी धीरे धीरे. तभी हम जीत सकते हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. मंशा, are there underground tunnels? Yes, there are underground tunnels in Ukraine which are used for human trafficking, organ trafficking. So exposed मतलब तुम्हें पता है, मुझे पता है, और इससे ज्यादा हम जैसे आम इंसान को अगर पता है तो exposed ही है ना. इससे ज्यादा क्या expose होगा. Yes, even Parth said that, Avni. And after listening, even I feel that अपना टाइम आएगा. Although that was channeled, and the elites not elites, the aliens, basically Ra, that lady has channeled Ra, and Ra is वो जो कुछ भी उसमें लॉ ऑफ वन में लिखा हुआ है वो आपको दुनिया के सारे धर्मों के रिलीजियस बुक्स में उसका अंश मिलेगा. Sell your soul, Illuminati, satanic, planning new world order. Inauguration, new world order, temple. Joining late. No, I'm not taking personal questions today, Ganesh. Ma'am, can you check if the Ukraine-Russia war is for real? 50% for real, not 100%. It's, I would say it's more of a cold war, and it is more, on the mainstream media or the social media. It's more of that. जैसे कोविड एक शैम था, वो भी एक शैम है. हाँ, कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, मारा होगा. नया साल मुबारक. हाँ, नया साल आप सबको मुबारक. गुड़ी पाड़वा है ना कल. गुड़ी पाड़वा असल में वो नया साल है. No, Shalu, I'm not taking personal. Thank you, Elliot. खुशबू, आज लेट हो गई. कोई बात नहीं खुशबू.
रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो हमेशा। थोड़ा और इलेबरेट, खुशबू लॉ ऑफ वन मैं इलेबरेट नहीं कर सकती, वो पा इलेबरेट करते हैं। आप लॉ ऑफ वन के वीडियोस देखो और चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लेना। कल होगा सेशन नंबर 6, थोड़ा लंबा होगा और दिन में होगा। कितने बजे होगा ये मैं नहीं बता सकती, शायद 2 बजे हो। 2-3 बार बुक पढ़ो, बुक की पीडीएफ भी है ग्रुप में, और वो वीडियोस देखो तब समझ में आएगा। यस, अभी तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं वो, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों को तो इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो हिंदी इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी समझा रहे हैं। हु रन्स द कंट्री, वही रन करते हैं, और उनके साथ में 2 नाम और ज्वाइन हो गए हैं ए से, आम और एड। समझ जाओ अब। विच डेट्स पोर्टल्स ओपन इन अप्रैल? आई विल लेट यू नो, आई हैव टू चेक। मैंने अभी तक वेयर इज माय बुक, एक सेकेंड, बुक बहुत नीचे पड़ी है। Which dates portals open? Twentieth of April is an important day. 24th of April is an important day. That I wouldn't say the portal is opening, but I would say that the energies will be strong. Just go on to Telegram, type Guinea Aneja 11 and join it, or Guinea Aneja 111. So that's 24th, 25th April ही है ना? कुछ गड़बड़ होगा तो बताइए। Seventeenth of April, not 24th, it's 23rd. 17th, 23rd, th 17th is also important because it's a full moon day. So it's going to be very powerful. The energy on 17th is going to be very powerful. That is the day you definitely need to sit and meditate. पैसा कमाने के कुछ मंत्र बताइए। इस महीने सब लोग बहुत पैसा कमाएंगे, सच्ची बोल रही हूं, टेंशन मत लो, पैसा आ जाएगा। अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपने सही डायरेक्शन, कुआ नंबर निकालो और सही डायरेक्शन में सो, इट विल हेल्प। How will they remove the nanoparticles that have been injecting into people's bodies all these years? No, nanoparticles they have been injecting only since last year, not before that. But how can you remove? आज किसी ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डिटॉक्स, नैनोपार्टिकल्स डिटॉक्स करने के कुछ लिंक्स और वीडियोस शेयर किए थे, वो देख लो।
केवल पिठाडिया, आप क्रिस्टल्स पे एक स्पेशल मैं बना चुकी हूँ क्रिस्टल्स पे। इनफैक्ट मैं जो वीडियोस बनाती हूँ हीलर्स को अपने चैनल पे लाती हूँ, सबसे पहली शुरुआत ही मैंने उसी से की थी, क्रिस्टल्स के ऊपर। कोई बात नहीं, एक बार नील आ जाए वापस, वो साउथ इंडिया गया हुआ है क्रिस्टल्स खरीदने के लिए, वो वापस आ जाए तो मैं उसके साथ मिलके क्रिस्टल्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। एस्ट्रोलॉजी पे भी, अरे एस्ट्रोलॉजी की तो बात ही मत करो। मैं जितने एस्ट्रोलॉजर्स को मैं जानती हूँ ना, सबको मैं मतलब उनका दिमाग खा गई हूँ कि मेरे साथ एक वीडियो कर लो, इस सब्जेक्ट पे करो, उस सब्जेक्ट पे करो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बोला है, उन लोगों ने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया है। फोन ही नहीं उठाते मेरा, मैं क्या करूं बताओ। करती हूँ, कोशिश करती हूँ। एक और एस्ट्रोलॉजर है मेरे दिमाग में जो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजर है। आई एम थिंकिंग कि आई शुड आस्क हिम इफ ही विल अग्री। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे मैंने सुशांत के टाइम पे बात की थी, तो तब किसी वजह से वो कर नहीं पाए। फिर बाद में मतलब वो बॉम्बे में नहीं है, थोड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये मतलब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये वो थोड़ा मुश्किल है, सो इस वजह से वो नहीं हुआ। बट ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? 17, 28, 23rd, यस 23rd बोला मैंने, 26 भी बोला ना, 26 बोला, पता नहीं, 23rd के बाद, हाँ 23rd, नॉट 26, या उससे पहले एक 9th अप्रैल है, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हेवॉक। 14th भी है, थोड़ा सा ओके है, लेकिन 9th अप्रैल पे बहुत भयंकर कुछ होगा, देखना। ये कौन है? राकेश शर्मा, उसके साथ लाइव क्यों करूं? ये है कौन? 444, yes of course, 444 also would be, it is yes 444 भी होगा। कौन इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है? सो नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं इस बारे में कोई बातें नहीं करने वाली। हाउ हनुमान चालीसा इफेक्ट्स फॉर सेल्फ, इट्स सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग। एनीवे, सो आई थिंक 8 बज चुके हैं and I've answered most of your questions. Thank you so much everyone for being here, and I will come back live next week. I wouldn't say tough, really. हाँ, 3rd to 13th, not 3rd to 7th, 3rd to 13th. I wouldn't say tough है, बीच में कुछ एक दो ठीक है, लेकिन कुछ दिन है जो पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, कहीं पे क्राइम किसी दिन बढ़ेगा, किसी दिन कोई ना कोई different kinds of issues. Now, one thing that I am worried about is religious clashes happening. अब वो कौन से दिन होंगे, कौन से महीने में होंगे, देखेंगे। हो सकता है इस महीने भी हो जाए, हो सकता है अगले महीने भी हो। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस प्रीति। No, I haven't seen that channel, Khushbu. Thank you so much, and I will come back next week to do free questions for y'all. मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, और इस बार मेरे स्टूडेंट्स की वजह से वो बीच में रह गया, लेकिन no problem. I'll come back next week and we'll do it. पक्का। Bye. Tuesday को I'm coming live with Daryl D'Souza, and this has got to do with the New World Order, so please do watch it. Bye.